आई होप आप सबको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होगा. Examination is an MCQ pattern. It is a computer-based test where the duration of examination is 90 minutes. And I hope आपको questions कितने आ रहे हैं पता होगा. There are 120 questions that to be answered in 90 minutes. So your rough calculation should be कि आप एक आंसर 45 seconds में complete करना है. If you are not able to complete the answer in 45 seconds, move to second answer. नहीं तो आप 120 क्वेश्चंस पूरे अपीयर नहीं कर पाएंगे. इसमें यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन होती है. तो सबसे पहले पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए you should be 30 minutes before the examination begins, you should be at your examination center for the registration of examination. There is a pre-registration which happens wherein your biometrics will be taken and a system will be allotted to you. This time the examination will be held in 3 sessions. So most of them are having a morning session, then an afternoon session, and for LLB 5YDC there is an evening session. So morning session starts 9:30 where the examination center gates open at 8 o'clock and it will be closed by 9 o'clock. So make it sure the first thing you do is you go on time, you be on time, appear the examination without panic. The second thing which you need to do is you need to carry your registration form with the hall ticket. I repeat, you need to carry your registration form with the hall ticket. And one more prerequisite is there that with the registration form, you need to get it attested from any gazetted officer or any of your college principals. That latest passport size photograph to be attached on the registration form. That is a mandatory prerequisite. If you haven't done till now, go get it done. You can get it done at any of your nearest police station. The SHO will be the gazetted officer, and any medical officer at any government hospitals is also a gazetted officer. You can get it signed from him. Okay. Now we will go towards the examination. See, as I told you that examination is of 45 minutes. Examination is of 90 minutes. Each question to be answered in 45 seconds. So this examination is in fact I'll just show you how the registration form is. Hope everybody remembers how the registration form. This is your registration form. If you turn to page 2, maybe in your case it will be on the lower side of page 1 only. Here on the right hand side you will find fix your latest passport size photograph 3 by 3.5 centimeter into 3.5 centimeter and get it attested from any gazette officer. This is the mandatory rule. Without this you won't be allowed in the examination hall. And hope everybody has downloaded this hall ticket. And hope you have gone through where is your center location. Maybe roughly around 1 hour from your place. So if you reside on a western part of the city, your center will be on an eastern part of the city. If you are residing on an eastern part of the city, your center will be in southern part of the city. This is called the jumbling pattern. Okay. This is the tradition followed since past 10 years. So time management is very important. Now we move on to the examination. The morning examination starts at 9:30, and that 9:30 examination the question paper is divided in 3 parts. I hope you might be familiar of what are the 3 parts. The part A will be general knowledge and mental abilities.
General knowledge and mental abilities, there are 30 questions in part A. So what this general knowledge and mental ability deals with? Mental abilities are your analytical abilities, your thinking abilities. How you think for a problem, how you get onto a solution. These are the mental abilities. So, and general knowledge is all the general knowledge which you acquire from day-to-day affairs, newspapers, and through trusted social media. So these are first 30 questions. These are very easy questions, very simple questions. You can gain good marks in this one. This is a part A which you can score more than 25 marks. Just read the questions 2 times. You can easily gain 25 marks out of 30. The second is part B. Again, 30 marks, 30 questions. This deals with current affairs. What do you mean by current affairs? Current affairs are good current situations which are going on. It can be legal or general pursuits. Whatever current affairs are going on in the country, in the global arena, wherever it is. Like presently, we are going on with the global war. Who are the countries which are involved in global war? So these type of all current affairs. Presently, there was elections in the 5 states in India. So who is the current CM of Tamil Nadu? So these are all current affairs questions. Like this, you will be having 30 questions. This chapter is also very easy. Someone who is very much intact with the latest current affairs. Someone who has a habit of reading the newspapers. Newspapers give you a very good current affairs. Okay. So go through with the current affairs. What happened from 2025 to 2026. These are all current affairs. Okay. Anything beyond 2000, that is examination which is on May 18th. The current affairs will stop by May 10th or tentatively May 12th. So any current affairs before May 12th, from June 25 till May 12th, all these are current affairs which happened in the year. These are part of current affairs. So current affairs is also very, very easy. The third part is aptitude of study of law. This is a little bit complex if you are alien towards legal background. Somebody who is an alien towards legal background and nobody in his family or her family are from legal profession. First time in the family attempting a law set and passionate towards law, this will be a quite tough for them. In this one, there are no harsh and tough questions, no Supreme Court citations. Okay, simple articles. What about fundamental rights? What are fundamental duties? Few criminal acts. These are all you need to go through. I hope this question 60 marks, at least you try to get 30 marks in this one. Okay, I'm not exaggerating the numbers. Getting 30 is easier. Beyond 30, it will be a little bit tough if you are from non-legal background. Yes, please come in. You are most welcome. Don't be late for the examination. Here you are. You can come down anytime. But please make it sure that tomorrow on examination, 9:30 examination, if you are late by a minute, that is the gates will close by 9. If you are late by a minute, you won't be allowed. Okay. So as I discussed the introduction of LAWCET, if you want, I'll repeat it again. Okay. Hope everybody has downloaded this hall ticket. Okay. So you have gone through your centers. Roughly 40 minutes away. Around 40 minutes away from your home. So what is your slot? Morning 9:30? 11:30 slot. So it's still you have some time. Yeah, 12:30 slot. That is second afternoon slot. Okay. So for anyone attempting the 12:30 slots, gate will be closed by 12 noon.
You won't be allowed by after 12 months, even a minute of late, you won't be allowed in the examination center. The 30 minutes is for your registration at the entrance desk. There will be a biometric verifications. After the biometric verification, you will be allotted a center. You will be allotted a system, and this examination is system based. Okay, and this examination is of MCQ pattern. You have 90 minutes to attempt 120 questions. Okay? So your time is little bit short compared to other computer examinations, wherein most of the computer examinations, average time is 1 minute, 1 question. But this is the only entrance examination where average time attempting 1 question is 45 seconds. You know why this average time has reduced over here? Have anybody ever watched proceedings at high courts or Supreme Courts? Nowadays it is available on social media. Have anybody watched any proceedings? Every day some proceedings comes of Supreme Court. See, in general cases, I'm not talking about high profile cases or cases which deal with the constitution matters. Leave about that Sabrimala case or any constitution case. I'm talking about a general case, whatever general case. Once it go to Supreme Court, a lawyer, a practicing good lawyer at Supreme Court gets 30 seconds to 1 minute to convince the judge that in the time of admission, once your matter reaches a Supreme Court, in the first hearing, what is your initial plea? What are your initial prayers? Initial prayers is you need to get the stay from what order you got it from the previous court. That is, if you got an adverse order from High Court, the order was against you, so you need a stay on that order. To convince that judge, you get only 1 minute. Within that 1 minute, you need to convince the ladyship or the lordship that you have a merits in the case and a stay may be granted. So this is how you are prepared for your analytical skills. So choice of words, how you map your brain to convince them. So it starts from here, that question which on all the entrance examination is of what, 1 minute, you get 15 seconds less to answer that same question. So you need to be in, your mind should be very much sharpened, that within 15 seconds you read the questions, analyze the options, and in next 30 seconds attempt the answers. Then if you want to rethink, you have again 15 seconds. And the worst part is you don't have a watch. So this is everything in brain mapping. Okay. So now I was discussing about the examination pattern. We have 3 parts in the examination. Yeah. 1 o'clock batch, they have to register 12 o'clock. That is only for 1 o'clock? I'll tell you. See, we have one batch at 9:30 in the morning. Okay. So anybody who's attending the 9:30 examination, they need to be there at the examination entrance gate before 9 o'clock. 9 o'clock is a cutoff time. 9:01 you are at examination center, you won't be allowed for the examination. Okay. Then second examination starts at 12:30. For 12:30 examination, you should be there before examination center by noon, 12 noon. These 30 minutes are for your registrations, allocation of your seat, allocation of your system, then giving you user ID and passwords. This is for 30 minutes. Then for 5 years, 5IDC entrance examination, anybody who's attending the 5IDC entrance, their examination starts at 4 o'clock in the evening. So they should be there at the examination by 3:30. Okay. Now coming to the examination pattern. Examination pattern is divided in 3 parts: Part A, Part B, and Part C. Same for 3YDC and same for 5YDC students. Only thing which varies for 3YDC and 5YDC is for 3YDC students, the standard of questions will be
somewhere testing your knowledge beyond graduation, because hope everybody is a graduate or waiting for the results of the graduation. Thinking that everybody has completed the graduation or about to complete a graduation in a month or two, the question paper will be designed as per your knowledge of your graduation, which you have a 15 years of education or 16 years of education prior to appearing an LLB entrance examination, as you are already a grad, plus your real-time knowledge. So this paper will be set on that standards. Somebody who's attending a 5 IDC, there the knowledge, testing knowledge parameters will be on 10+2 standard, that is intermediate. Okay, because they have gone through 12 years of education and tender age, their limited knowledge, so their parameters will be a little bit lesser. Then now how I come to the pattern. Part A consists of general knowledge and mental abilities. I have already discussed what is general knowledge and mental abilities. Again, I'll discuss. General knowledge is what knowledge you acquire from the surroundings. Okay. Mental abilities are your thinking abilities. How you think. There is a problem. How you think the solution of the problem will be. These are the mental abilities. Mental abilities is very much important in legal profession. Why it is important in legal profession is, sometimes what is written in law is not absolute. It is not properly defined. The words are not properly defined. Now you use your mental abilities to put your case in front of the bench that what law speaks is like this as per your mental abilities. So that's why mental abilities are very much important. So here we have 30 questions from general knowledge and mental abilities. Why general knowledge is important for legal profession and for law entrances? Law is the only profession which goes around all the professions. You should have basic level knowledge of all the professions. You don't know tomorrow, once you are into the advocacy, which type of litigation comes across you. Whether it will be a medical negligence, a commercial trade dispute, any kind of litigation, a pharmaceutical litigation, any kind of litigations comes to you. You can't say that you don't have a subject knowledge of that subject. Being an advocate, you have to go through of the subject. So that's where the general knowledge is important. Okay, like journalists, they don't have subject knowledge of all the fields, but once they come on at 9 o'clock prime time, they put a discussion that they are experts in that field. So same comes with the legal profession. The second part B consists of current affairs. Current affairs are what currently going on in the country and around the world. What happened in year 2025 to 26. The latest current affairs that are all part of current affairs. Very important subject. You need to be updated on the current affairs. If you are planning to come down to the profession of advocacy, current affairs are very important. The reason being said, you need to be day-to-day based aware of what the latest judgments of the Supreme Courts and the High Courts. That does not affect only you, it affects the complete society. Okay? So part A and part B are easier. Part A consists of 30 questions. If you read the questions 2 times, easily you can attempt 25 questions. You have to attempt all the 30. I am telling you 25 questions correctly. Don't leave even a single question. Okay? But you can easily gain 25 marks from part A. Now come to part B. Part B, if anybody is having a habit of reading newspapers and good magazines, good journals or articles, you will have all the current affairs. So again, from current affairs, you can gain 25 marks out of 30.
These two sections are very easier, and getting marks in these two sections are very, very easy. These two, part A and part B, totally consist of 60 marks. From here you can easily gain 50 marks. If I'm calculating on a lower side also, getting 45 is very easy. I hope everybody gets 50 over here and maybe beyond 50. Now come to part C. This is a bit tricky. This section speaks about aptitude of study of law. This comes with some legal background, a basic knowledge of law, basic knowledge of Constitution of India, basic knowledge of fundamental rights, directive principles, fundamental duties, and basic criminal law. Rare of the rare case, they'll ask about the civil laws and all other laws. The questions will be either from criminal laws, constitution, that are articles, how many articles are there, what are the fundamental rights, what are directive principles. Okay. There are 60 questions framed in this one. This is a little bit tricky. You need to study the questions 2 times, 3 times to get the answer. Okay. So in this 60 marks, if you get 30, then your total goes to 80. Chalo, let's cut off more 5 questions. You can easily come down to 75 marks. And 75 is considered as good marks in LAWCET. Getting 75 marks, everybody sitting in this hall who gets 75 and above can get a seat in a reputed college of Hyderabad. Easily. Whether they belong to any reserve category or open category or EWS category, with this 75 marks, you can get the admission easily. In fact, if you are eligible for scholarships, you can complete your LLB with the government scholarships also. Okay. So anybody who knows what is the cutoff marks? Tomorrow you are attempting the paper. The cutoff marks is 35%, and 35% comes to 48 marks. Sorry, it is not 48, it is 42. It is 35 marks, it is 42. 48 was previously, now they have reduced to 42 in all the competitive examinations. 42 is the cutoff marks. So your first target is to cross the cutoff marks. Okay. Once you cross the cutoff marks, then next target is scoring. The target is 80. You can score beyond 80 also, but your target should be at least 80. So you will come down to 75. Okay. 42. 42. That is 35% of marks. And from section A and section B, you can easily get that marks. Leave about section C. Just proper attempt of section A and section B, you can get 42 marks easily. First, part A में जो है 30 क्वेश्चन 30 questions. और B 30 questions. 30 questions. इसमें से कम से कम 25 you can answer easily. Easily. That are all easy questions. मैं जब रजिस्ट्रेशन करा था जब जाके लॉसेट में तो उसके अंदर मैं दोनों ऑप्शन रखा था मेरे लिए इंग्लिश और उर्दू तो क्या I'll get you. So, okay, can come. Now at the time of registration, there were 2 options. The option was either your paper in English or Telugu or English or Urdu.
So whoever attempted for English and Telugu, the question will be given in English as well as in Telugu. Okay. But if in case the question is Telugu is not correct, or there are incorrect options given, or the translation is mistaken in Telugu, that will not be considered. Whatever question is correct in English, that will be considered. Okay, if there is a mistake in English paper, then only you will be allotted grade marks. Same happens with paper with English and Urdu. If in case the question is given in English and the translation of English to Urdu, there is an error. That error will not be counted, because English paper in English will be treated as a primary paper, and the marks will be allotted based on the English paper. Okay, this is to understand, because before entering into the legal profession, somebody might be from some other background. Background means medium of instruction. You might be from Telugu medium, you might be from Urdu medium, or you might be from any other medium. Just that every section of the society will to be motivated to pursue the profession of law. And in fact, 30 years, 40 years down to line, they were advocates who were from Urdu medium and Telugu medium and Hindi medium, who were the best advocates of their days. Okay, because in those days in rural India, English medium education was rarely available in rural India. In urban places, from the day one, English medium education is available. Just to promote the local language, you have a paper in English as well as in Urdu. Anybody who has opted for an Urdu paper, you have a paper in second half, that is 12:30. Okay. So, but once you have gone through your entrance examination, leave all other subjects. Your complete studies in English. This profession demands your English vocabulary, your English communication skills, especially if you want to practice at high courts and supreme courts. Yes, if you want to practice at lower court, then your state regional language is mandatory. Why it is mandatory is, all the legal drafts, all the FIRs, all the complaints in the rural part of the city or in the semi-urbans are given in the local language. So you need to know the local language, that is Urdu or Telugu. But the language of the court is English. Whatever documents are given in Telugu are again translated in English and are given to the courts. So primarily your English should be very good. You should enhance your English language, your English communication skill and your vocabulary. Okay. So now we are discussing about part 1 and part 2. I hope everybody has a little bit knowledge of what is coming in part 1 and part A and part B. Now come across to part C. Part C is, as I said to you, that it is a bit tricky legal questions. The question comes from Constitution of India, articles in the constitutions, chapters in the constitution. What are the fundamental rights of a citizen? What are the fundamental rights of a resident? What are the fundamental duties of a citizen? What are the directive principles of the states? These will be aspects which will be covered in the legal aptitude test. Then a basic overview of criminal law. Okay. So these are there. In the part C, you will have 60 questions. I again repeat, if you are finding part C as tough one, attempt part A and part B. Go through part A and part B. Give your first 45 minutes for part A and part B. Or in fact, if possible, give 60 minutes of your time in part A and part B, so that at least you get a minimum marks from there where you qualify. When it comes to part C,
Whatever marks you are getting in part C are the cherry on the cake. Whatever marks you are scoring, planning to score 75, 80 or beyond 80. These are all cherry on the cake which will give you a seat in any good colleges throughout Telangana. Okay. Part A and Part B is important because it is very much scoring, easily scoreable, easily you can get the marks. Target is getting 50 marks from there. Once you go through that target, your basic reason for entrance, appearing the entrance examination is to qualify. That criteria is met. Then you go for scoring. Okay. Now, I guess you have gone through the rules and regulation of the examination. Phones, smartwatches are not allowed. Any electronic gadgets, it's not allowed. Okay. Then you can carry a pen, that too a transparent pen with you. In fact, rough papers will also be given to you at the examination center. You are not allowed to carry your own rough papers also. With this one, you need to carry your original ID proof, that is your Aadhaar card, maybe a color printout or a physical PVC card. You need to carry that with them. And at the help desk, you need to show your Aadhaar card with your registration form and the hall ticket. Then there will be a registration formalities. With that registration formalities, you will be given a seat in the examination center. Okay. If you are able to complete your paper in less than 90 minutes, that is your cutoff time. I don't think so anybody can complete the paper. If randomly you give your answers and finish it off in 30 minutes, that is a different story. But if you are reading the paper and trying to give a proper answer, 90 minutes are also not sufficient. But if in case you are able to finish your paper before 90 minutes, that is, hypothetically speaking, somebody is very much genius, or somebody who has given a paper randomly finished this paper in 60 minutes. If you are able to finish your paper in 60 minutes also, you will not be allowed to go out of the examination hall. So you are occupied with the 90 minutes. So utilize that 90 minutes and give your best shot. Rather having a hurry that somebody else is waiting for me outside, or I have not gone for the lunch, without having lunch or without having breakfast, I have come up for this examination center and I'll finish the paper in a hurry and I'll go and have some lunch or some breakfast. Don't do like that. You won't be allowed to leave your examination even a minute is left in the duration of examination. Okay. So make it sure that you utilize your proper 90 minutes over here. Next is, once you have come up, given your examination, in the next 2 days, that is tomorrow is 18th, your examination is there. Mostly by 20 or 21st, the key will be released. With the key, you can download your answer booklet. Yes. As you have downloaded your hall ticket, with the same procedure, there will be a download your answer and response sheet option. You can download your response sheet, see whatever questions you have given, cross-check with the key, okay, calculate the marks you have obtained. And if you feel that any question which was incorrect, report to LAWCET that this and this question has been incorrect with the proper format which is available on the LAWCET website. You can challenge that question by paying a fees of 500 rupees per question. You can challenge that question, and if in case your challenge is accepted, not only you, everybody will be given that 1 grace mark. Okay. So do that thing, not to challenge, but to verify your response sheet, whatever answers you have given. Okay. Keep that response sheet safely
In case there is a dispute arises where you got your response sheet, marks in the response sheet differs from your marks given in the final rank card, then you can keep this response sheet and verify the marks properly with the rank card, because this response sheet will be available on the website for only 2 to 3 days, not more than that. So within that time, there will be a cutoff time given that if the response sheet is issued on 21st, there will be a cutoff time given that by 24th 5 p.m. this link will be closed. Before that, you need to download your response sheet and keep it safely. And by the time the rank cards and the ranks are declared, it will take around more 15 days, because somebody will challenge some questions, then the LAWCET need to verify that whether the whatever challenges are there are correct or incorrect. Then your final results will be declared. Once the final results will be declared, you will be getting your rank card. Okay. Now, what is that I have written on the board? This is 2500 is the cutoff rank you need to score if you belong to open category for a male to get a seat in any of the reputed colleges in Hyderabad. So your rank should be below 2500. And you know how many candidates are appearing LAWCET this year? Any idea? How many seats are there for 3YDC? Anybody has any idea? In a complete state of Telangana? Throughout Telangana, there are less than 6,000 seats. Exact numbers will be declared somewhere in the month of July, August. This is less than 6,000. I am exaggerating the figures. This is not 6,000. This is less than 6,000. This includes few colleges which are restricted to female only, colleges restricted only for BC, and colleges restricted only for ST also. So as I think most of you belong to open category, you think that this number come down to, cutting the reserve category, this number come down to 3,000 for open category seats. Only 3,000 seats are there in open category. And I am leaving aside the horizontal reservation which is given to the female candidates. That is all included in this one. Okay. Now, do you have anybody have the numbers and how many have attended the LAWCET? How many are planning to attempt the LAWCET tomorrow? Numbers? Any rough figures? Sir, this figure includes No, this is for 3YDC. 5YDC is around 5YDC overall seats is around 2,000. And if you leave all the reserve categories, open category, it is roughly around 1,200 seats. Do you have any numbers? If I am calculating the open category seats, that is 3,000 per 1,200. This is only 4,200 seats throughout the state of Telangana, where most of the colleges are located in Hyderabad itself. There are very few colleges which are located outside Hyderabad. Anybody have numbers? Anybody can imagine the numbers? That is a huge number. 5 lakh is the number of students who have appeared intermediate second year this year. This is the number. 50,000 students are planning to appear LAWCET this year. So think of the competition you have. Roughly 1:12. For every 1 seat, 12 students are competing for a seat. You know, if you after intermediate, there is an entrance examination called APSET. This is for the students appearing for engineering.
engineering, and anybody who has completed intermediate with MPC and student appearing for engineering. Here roughly around 2 lakh students completed MPC in intermediate this year. Seats available in engineering are around 1,60,000. Oh. Hypothetically, if all the students wants to go for engineering also, there are chances that 90% students or 80% students get a seat in engineering. So getting a seat in engineering is becoming easier than getting a seat in law. That's why I want to explain that competition is 1:12. Yes, 50,000 students have registered. We are waiting for the exact numbers because till 15th the registrations were on. In fact, Friday was the last date for the registrations and some numbers have gone up also. You will be getting an exact number tomorrow. Out of that 50,000, roughly around say 45,000 student appears for the examination. 40,000 student appearing for examination. Then also you have a huge competition. Hypothetically speaking, if this 40,000, 50% qualifies. That is 20,000. Out of 20,000 also, only 3,000 seats. Let's say in this 20,000, half of the candidates are from reserve category. ST, SC, BC or EWS. Then remaining the 10,000 seats. 10,000 students. For 10,000 students, there are only 3,000 seats. Still the ratio is 1:1.33. So for every one seat, there are 3.33 students competing for that seat. So that's the reason I started that you should get this marks. 75. If you are able to get 42 marks, yes, you will qualify. You will qualify, you will get some rank. Some rank may be around, if 20,000 student qualifies, maybe around 15,000, 16,000, because for ST category there is now no cut-off marks. Just attempting a paper, they will be given a rank. You will get 15,000, 18,000 rank. With that rank in the convener quota, it is very tough to get the seat. So accelerate yourselves for a better examination to get at least 75 marks. With this 75 marks, with my previous experience, you can get a rank below 3,000. And below 3,000 rank, you can get a seat easily around the colleges within the city of Hyderabad. As this is a LAWCET paper, so I'm not talking any seat about the management quota or NIQ quota. That we will have some other session, some other day for management quota seats or NIQ quota seats. We'll leave that seats. We'll think that their seats are not available for us as of now. As of now, our focus here is, as we all are attempting our LAWCET entrance examination, to get a seat in the convener quota. Because the fees difference between a convener quota and a management quota is 1:5. Whatever fees you are paying in convener quota will be in 5x whatever you go for a management quota. Or if not 5x, 4x is the standards going on. Basic standard which are going on. So if you're not able to qualify or not able to get this marks, then you need to buy the seat. And with this entrance examination and with this marks, you are not only getting your seat in merits, but you are enhancing your knowledge also. And this shows that you are in very serious towards this profession, because this profession requires passion and zeal. So you need to show your passion and zeal from now. And for 5IDC students, good news is that student attempting 5IDC, there are very less numbers of students who appear for 5IDC entrance examination. Roughly around 6,000 to 8,000 students appear for 5IDC entrance examination. So 5IDC students, they have a good chance of getting a seat if they have around 60 marks.
So anybody who's attempting a 5IDC entrance examination, at least try to get this mark, 60. Their seats are different. Their seats are different. They are around, open category seats roughly around 1200 in 5IDC. The competition in 5IDC is lesser because what happens is most of the students after intermediate, they don't think law is a serious profession. They go to some other professions, some XYZ profession, unless and until their family background is of legal profession, their parents, their brothers, sisters, or their gurus, anybody is in the legal profession, anybody is a practicing advocate or a judge, then only they passionately come towards 5 years of legal studies because they are focused from the day one. Else, most of the students, what they do is, they do their graduation 3 years or 4 years, then they come down to this legal profession. So, because you have matured enough, you completed your graduation, you completed your masters, most of you might have completed their masters or multiple masters. So, you are very much matured enough, crossed the age of minimum 30 years, beyond 40, 50, 60, any number. Because you are matured enough, the competition is also high. Because the students of 5IDC, they are of tender age, they are less exposed, the competition is also less, very less for them. आ गए वो enough है. Okay. So again, lastly, I welcome you to this noble profession of advocacy. Very, very good profession. You have taken a very good initiative by filling your entrance examination form, downloaded your hall ticket. Step 1 is completed. Tomorrow is your step 2. Give your best. Be on time on the examination. Okay. And try your best shot. Pray to Almighty Allah that you get all your mapped questions, whatever mapped in your mind. Pray to Almighty that all ever mapped in your mind get triggered at that time so that you can easily answer the questions. Inshallah, everybody who are here, I am hoping that they get beyond 75. Inshallah. So what happens is if you get beyond 75, you have crossed your first hurdle. You got your initial confidence that I have crossed my first hurdle. Now I can go further in my legal studies. Okay. Then you go on admission process is there. You complete your 3 years in the college where you will have a theological study. The law studies in law colleges, that too, traditional law colleges which are all affiliated to Osmania University or other universities within Telangana, they are all theological colleges. Okay. You will study the theological aspect of the law, the theory of the law from these colleges. With this, you need to be associated with any of the law firms or any of the practicing advocates to get the practical knowledge. This place is a very good platform for you, Khan's Advocates and Associate, where from the first year yourself you can join this office as an intern. You can get your advocacy skills enhanced over here. You will get a practical experience over here where no college will teach you the practical experience. Yes, colleges are good to teach you the theological aspect of the law. You learn all the theory, but theory is not sufficient. With theory, you will learn how to draft. You will enhance your drafting skills. But they are arguments in the court. They are citations to be referred in the court. There is a mannerism and decorum to appear before the court. That is very important. These all aspects are practical aspects where you can learn at any law firm only. With a law degree and a theoretical experience, you can be a very good theological advocate, but your practical knowledge will be zero. That will be very much helpful if somebody is planning for judicial service examinations.
Anybody knows what is judicial service examinations? Yes. Judicial service examinations are for junior civil judge, senior civil judge. They are the judicial service examinations. For them, these theoretical aspects are very important. But if I guess most of you are passionate towards practice. So if you are passionate towards practice, with the college, you will have ample amount of time. Spend a time at any of the law firm, any of the practicing advocate to get the practical knowledge. In fact, I want to add one more thing in that one. See, in the worst case scenario, Khuda na khasta, if not, you are not able to qualify the LAWCET examination or you are not able to get the seat, don't rush it around for a management quota seat, paying 4x, 5x price for a management quota seat. Wait for 1 year. Go to any law firm. Join them as an intern. Join them as over there. Go through the experience from them. Learn their practical exposure. Then you can come down to the law college next year also. Don't think that my 1 year is wasted or my life is gone. Because this is a daily learning process. The court works for average 5 days a week. So you have 5 days a week of learning, getting experience from the high courts and supreme courts, and then the 2 days are there to enhance your skill to draft whatever you gained in from the past 5 days. So this is not a part-time profession. This is a complete full-time dedication given profession. If anybody is planning to come down to this profession as a part-time profession, I would say that you can switch to some other profession. Any doubts? 60 marks का है जी, टॉस के लिए टेबल ये 60 मार्क्स इसलिए डाला मैं, देखिए क्वालिफाई तो 42 पे हो जाते हैं आप, 42 पे हो जाते हैं, 42 पे सीट मिलना मुश्किल हो जाती है, कंपटीशन है ना। जैसा आप लिख रहे हैं, आपके साथ लिखने वाले 5IDC में 6000 बच्चे हैं, ठीक है, 6000 में समझिए 5500 बच्चे लिखे। मैं एक्सपेक्ट करो 5IDC में 5500 बच्चे लिखते, ज़्यादा बच्चे लिखते, क्योंकि 5IDC में जो भी आ रहे हैं वो लोग पैशनेट है, क्योंकि उनके पास फैमिली बैकग्राउंड है, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस है या पीर इन्फ्लुएंस है, जो भी है, दे आर कमिंग विद द पैशन, दे आर डिसाइडेड इन देयर माइंड दैट दे वांट टू गो फॉर ए लीगल प्रोफेशन। तो इसमें 5500 और इसमें रफली अराउंड 3000 स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, सीट्स है 1200। अगेन द कॉम्पिटिशन, दैट्स वाई I have suggested that 60 to be cut off marks for 5IDC. You should get this marks to get a good seat in any of the reputed law colleges. Still, your competition compared to what student who want to pursue LLB 3IDC after graduation is lesser. Getting a seat is easier. In fact, last year most of the students got seat for 42 marks also, but don't think that that pattern will be carried forward every year. Last year they were lucky enough that few colleges got late affiliation, so they were not able to participate in the first level of counseling, so they got in the second level of counseling, due to which the students who got 42 marks also got the seat in 5IDC LLB. I'm talking about only the open category OC. I'm not talking about the reserve category. Okay, I hope your doubt is clear. So anybody else with any doubts? There is no dress code for examination. Till the day you attempt your examination, till the day you join your law college, till the day you finish your law degree, there is no dress code. But once you come down to the court, there is a dress code. If you are not an advocate, if you are just an intern also, there is a dress code. Okay, but dressed modestly. Your attire should display that you are coming to a serious profession. Okay. That was in the form. I'll show you that form. See,
This is your application form wherein you have filled your application form at the time of registration. You need to carry this form with you. Okay. This form, there are two things you need to get it done. First thing is that fix your latest passport size photograph, size 3.5 by 3.5 centimeter, well in advance before examination. Well in advance before examination means tomorrow is your examination. You need to get it done before that examination. Fix the latest passport size photograph at this box. 3.5 is 3.5. Ideal size is given. A size plus or minus will also be acceptable. But important thing is you need to get it attested from any gazetted officer or any principal of your college. Okay. Then there are two more columns. Column 2 is signature of the candidate in presence of invigilator. That to be done in the examination hall. Column 3 is thumb impression. That also be done in the examination hall. Okay. They will have a stamp pad. They will give you a stamp pad. You need to give your thumb impression there itself. Okay. ठीक है. आज तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन लीगल प्रोफेशन आने के बाद आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशन पूरा इंग्लिश में. ठीक है, मैं आज समझा देता हूँ. आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करे थे, ये फॉर्म डाउनलोड करें आप. ये फॉर्म डाउनलोड कर, हाँ आप चेक करिए. अगर ये पेपर आया तो हर प्रिंटर का अलग अलग ऑप्शन रहता. यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन रहता आपको, आपका फॉर्म निकाल के बताइए मेरे को. वो हर प्रिंटर का अलग अलग ऑप्शन है. उसमें लास्ट में जाइए आप. ये हॉल टिकट है आपका, ये हॉल टिकट है आपका, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका. आप जब रजिस्टर करें तो ये फॉर्म आया आपको. हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें आप हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें? रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से है आपके पास? वो पेपर, वही पेपर निकालिए. जी, ये पेपर का प्रिंट आउट के साथ इसका पेज 2 निकालिए आप. ये कट हो गया आपके पास, डाउनलोड करिए, फिर से मिल जाता आपको. वो पूरा डाउनलोड नहीं हुआ. वो आप ऑफिस पे रिसेप्शन में जाइए, निकलते वक्त एक बार सर को पूरे नंबर्स दीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स दीजिए, आपको उन्होंने लिंक भेज देंगे. वो डाउनलोड करिए, फिर से डाउनलोड करिए, फिर से डाउनलोड करके लेके जाइए. और उसके बाद उस पर फ़ोटो चिपकाना रहेगा. यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक आपको लेटेस्ट आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाना रहेगा. इसको चिपका के इसको गेजेटेड ऑफिसर से साइन लेना. गेजेटेड ऑफिसर कौन है? नहीं, गेजेटेड ऑफिसर वो ऑफिसर है जो ग्रेड 1 ऑफिसर में काउंट होता. कम से कम ऑफिसर ऑफ दैट ऑफिस. जैसा पुलिस स्टेशन में ऑफिसर कौन रहता? SHO. SHO ग्रेड 1 ऑफिसर रहता. तो SHO से आप साइन ले सकते. इसके अलावा कोई भी मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उससे साइन ले सकते. क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रिंसिपल के पास तो नहीं जा सकते. अगर प्रिंसिपल से आपके पर्सनल टर्म्स है, घर पे जाके मिलकर स्टैम्प साइन ले रहे हैं तो ले लीजिए, अगर आप प्रिंसिपल को आपके कॉलेज डेज में तंग नहीं करें तो. ठीक है, या नहीं तो SHO करने जाइए. SHO करने जाइए. SHO एक ऐसा ऑफिस है जो 24 घंटे खुला रहता है. SHO अवेलेबल रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम PS में. नहीं, एडवोकेट्स ओनली गवर्नमेंट प्लीडर्स, GP, जो गवर्नमेंट के लिए लड़ते केसेस, सिर्फ उन्हीं से करा सकते हैं. उन्हें ग्रीन पेन से ही करते हैं, उन्हें यूज ही ग्रीन पेन करते हैं. कोई भी मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट के, प्राइवेट नहीं, स्टैम्प रहना उनका. स्टैम्प पे उन्हें अटैच करेंगे आपकी फ़ोटोग्राफ को. नोटरी रहती है वो. नहीं, वो नोटरी है. वो नोटरी अलग चीज़ हो गई. नोटराइज जो है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, अटैच नहीं करते उन्हें. मैंडेटरी है, रूल में लिखा हुआ है. क्यों फेस नहीं मैच करेंगे? इसलिए तो लेटेस्ट पासपोर्ट है, इस फोटोग्राफ पूछा उसमें. यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है. यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है. क्या चीज़ चल जाता? किससे कराया?
खैर गो विद द फ्लो गए तो कभी कभार चले जाता, लेकिन मौका है तो फिर से करा लेती। क्योंकि रूल क्या बोल रहा वो है, मैं वही बोल रहा हूँ, व्हाट द रूल स्पीक्स, यू नीड टू गो विद द रूल। आप यू आर इन लीगल प्रोफेशन, यू नीड टू स्टडी द रूल एंड यू कैन ओनली फाइट वंस यू नो द रूल। CI, सर्कल इंस्पेक्टर इज द ग्रीन पेन होल्डर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। बिल्कुल कर देते, बिल्कुल कर देते। पूछते, आपका इंट्रोडक्शन लेते, आप अपना इंट्रोडक्शन देना, कॉन्फिडेंटली जाना। एक लॉयर और एक पुलिस ऑफिसर दोनों ऐसा है जैसा को ब्रदर्स है, वैसा है, को ब्रदर्स है जैसा है लोग। नहीं, एक मियाँ में दोनों को साथ ही काम करना है। नहीं, दोनों को साथ में काम करना है, दोनों को साथ में ही काम करना है। नहीं छुपाते नहीं, उनको एक्सपोज करते, उनको एक्सपोज करते, दोनों भी छुपाते नहीं एक दूसरे को। उनके गलतियाँ जो इन्वेस्टिगेशन में गलतियाँ होते, वो हमारा काम है एज एन एडवोकेट उसको एक्सपोज करना, ताकि हमारे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल करा को ब्रदर्स नहीं बोला मैं। फोटोज़ नहीं, एक ही फ़ोटो उसके ऊपर चिपका के जाइए, ठीक है। साथ में आधार कार्ड इसलिए कैरी करना है क्योंकि आपका आईडी प्रूफ है वो। इनफ, PVC कार्ड इज इनफ, और यू कैन डाउनलोडेड आधार कार्ड इज ऑल्सो इनफ। क्या कलर प्रिंट आउट इज सफिशिएंट। वैलेट्स आर नॉट अलाउड। वैलेट्स आप डिपॉजिट करना, खाली कार्ड आपके साथ, कार्ड अलाउड है। देखिए डिपॉजिट काउंटर अवेलेबल है नहीं है, ये आप सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेंटर की जिम्मेदारी। अगर सेंटर आपको प्रोवाइड कर सक रही ठीक है, कोई सेंटर में अगर नहीं है तो आपको अपनी रिस्क पे रखना है, वो चीज़। इनफैक्ट कई सेंटर से कंप्लेंट आई कि उनके पास डिपॉजिटिंग प्रोविज़न था ही नहीं, क्योंकि रूल में नहीं है वो। तो इफ इट इज़ नॉट इन द रूल, दे आर नॉट बाउंड टू डू दैट। If they are doing that, that is a service, and sometimes they charge for it. नहीं रख लो ना आपके साथ, PVC कार्ड अलाउड रहता। A PVC card of your ID proof and a pen and a water bottle without the sticker is allowed. जी, transparent water bottle. Pen should also be transparent. खैर इनफैक्ट मेरे पास नहीं है अभी, जो बताइए ये ट्रांसपेरेंट पेन है, वो ट्रांसलूसेंट है, वो ट्रांसपेरेंट है। आप नहीं लेके गए तो नहीं, आपको जब एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, रफ वर्क कैसा करेंगे आप? उन्होंने पेपर देते, पेंसिल ले आप लेके देखिए, दिए नहीं दिए, आप अपने हथियार अपने साथ रखना है आपको। उन्होंने देने में आधा घंटा लेट कर दिया, आपका आधा घंटा गया। आपका एग्जाम 90 मिनट्स का है, 30 मिनट्स वेस्ट हो गए। ठीक है, आप उनको डिमांड करें, मेरे को पेंसिल दीजिए, पेन दीजिए, ओके फाइन। उन्होंने गए, ऊपर से इन्वेंट्री लिख के लेके आए, आधा घंटा आपका गया। वो रिव्यूज तो कोई नहीं करेंगे आपको टाइम। सब सिस्टम बेस्ड एग्जामिनेशन है। देखिए अब रफ वर्क कैसा करेंगे क्वेश्चन को? आपके पास रोबोटिक स्किल्स है कि आप कैलकुलेशंस माइंड में कर ले सक रहे हैं तो फाइन इनफ। हाँ, सिग्नेचर के लिए खैर वो पेन उनका खुद लेके आते। इनफैक्ट अगर मैं और एक सजेशन दूंगा कि अभी तक अगर कोई भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए और ये फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं, तो लॉसेट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जाइए, अपीयर होइए, मॉक टेस्ट अपीयर होइए। अगर किसी को मुश्किल हो रही तो इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी हम वो प्रोविज़न रखे, आप यहाँ बैठ के भी मॉक टेस्ट दे सकते। खान्स एडवोकेट्स के ऑफिस में वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग कि आपको मॉक टेस्ट के ऑप्शन भी अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी आप बैठ के दे सकते हैं मॉक टेस्ट।
या आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप सिस्टम पे बैठ के घर पे कहीं पे भी जाके दीजिए मॉक टेस्ट, एटलीस्ट आपको आइडिया होता। अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहली बार दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए। एक कंडीशन है वो मॉक टेस्ट जो है 180 से 150 मतलब 120 वो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट मॉक टेस्ट में आइडिया हो जाता। वो गलतफहमी में न रहना। और लॉसेट का मॉक टेस्ट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो एग्जैक्ट 90 मिनट्स के हैं। कई सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है जिस पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर कोई अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्रीवियस 3 ईयर्स का क्वेश्चंस निकाल के एक बार रीड करिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 10-12 घंटे है लर्निंग के आपके पास। एटलीस्ट प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखिए। होते पार्ट सी में रिपीट होते, पार्ट सी में रिपीट होते थोड़ा। आपके साथ आपका आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका हॉल टिकट कैरी करना है। भाई ये सिंपल ट्रिक है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। देखिए पहला आपके पास जैसा क्वेश्चन अपीयर होते 15 सेकंड्स में आप क्वेश्चन पढ़ लेना, और ये 15 सेकंड्स आपके माइंड में चला, आपके हाथ में वॉच नहीं रहती। एक बार रिवर्स काउंटडाउन की वॉच लगी हुई रहती, सिस्टम पे ब्लिंक होते रहती। 15 सेकंड्स में आप क्वेश्चन पढ़ना, 15 सेकंड्स में ऑप्शंस को एनालाइज करना, 30 सेकंड्स के अंदर आंसर को शॉर्टलिस्ट कर लेना, ऑप्शंस कौन से हो सकते। नहीं समझ में आया, 15 सेकंड बचे आपके पास, फिर से रीड करके आंसर दे देना। 45 सेकंड्स हो गए तो आप आंसर देके मूव ऑन होना ही होना है आपको। 45 सेकंड्स में आप 45 सेकंड से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में अटक गए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम आप कट डाउन करना पड़ता आपको। है इंग्लिश में, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ आप एवरेज 45 सेकंड्स लेके चलिए। कुछ क्वेश्चन ईजी रहते हैं, वो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं आप। और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस पैराग्राफ जो रहेंगे ऐसे कुछ रहेंगे तो उसके सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस रहते हैं। वो सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस को आप स्किप करके बाद में दीजिए। वहाँ पे ऑरेंज एक पिंक लाइन रहती आंसर लेटर बोल के, वो पिंक आपको सेलेक्ट करके छोड़ देना। आखिरी के 15 मिनट बफर रखना कि अगर, क्योंकि 90 मिनट्स है, 75 मिनट्स में कंप्लीट करके वो क्वेश्चंस की तरफ आ सकते हैं। उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ आए तो 5 मार्क्स फुल, 2 पैराग्राफ आए तो 10 मार्क्स फुल स्कोर कर सकते हैं आप, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर वही क्वेश्चन में रहता है। तो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं आप, प्रीवियस क्वेश्चन को जा सकते हैं। देखिए ये स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन 2 हिस्सों में डिवाइड रहती। ओके, यहाँ पे आपके नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 अप टू 90। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया उसको ग्रीन से बताता, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद अटेम्प्ट करके आप मार्क करें तो वो पिंक से बताता, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करें वो रेड से बताता। तो उसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन में चले आ सकते हैं। आपके बाजू वाले का क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहता, क्वेश्चन जंबल होते तो बाजू वाले का नहीं देखे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, और बाजू वाले का देखने का टाइम भी नहीं रहता आपका, नहीं, क्योंकि आप कुछ 45 सेकंड्स में एक आंसर देना है। तो आजू बाजू देख के टाइम वेस्ट मत करिए, कुछ हासिल नहीं होने वाला है बाजू वाले का देख के। अगर आप बात करते हुए पकड़े गए या कुछ भी एक्सचेंज आप दोनों में करते हुए पकड़े गए, और क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन सर्वेलेंस में मॉनिटर है तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हैं, दे हैव द अथॉरिटी। लेकिन ऐसा कुछ मत करिए, ना आप डिस्टर्ब होइए ना बाजू वाले को डिस्टर्ब करिए, ना कोई आपको डिस्टर्ब करा तो उसको एंटरटेन करिए। सेम, जी बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न में है। मॉक टेस्ट अपीयर करिए, एटलीस्ट आपको पैटर्न क्या है उसका आइडिया हो जाएगा। आ जाता, फ़ोन में भी आ जाता। लॉसेट की वेबसाइट पे जाइए, मिल जाता आपको। लॉसेट की वेबसाइट पे जब जाएंगे आप तो एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड हॉल टिकट।
आप लॉसेट की वेबसाइट खोलिए, लॉसेट की वेबसाइट खोलिए। लॉसेट की वेबसाइट में एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस में 7th ऑप्शन है मॉक टेस्ट। वहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे आपको, 3YDC, 5YDC, PGLCET। जो कैंडिडेट्स 3YDC का एंट्रेंस दे रहे हैं वो 3YDC अटेम्प्ट करिए, जो कैंडिडेट्स 5YDC का एंट्रेंस दे रहे हैं वो 5YDC अटेम्प्ट करिए। PGLCET इज़ फॉर मास्टर्स इन लॉ, जो ऑलरेडी लॉ में ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए PGLCET है। जी, खाली क्लिक करिए उसको, ब्लू को क्लिक करिए, ब्लू लाइन को। रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप जो सवाल करे थे मेरे से कि कैसा आएगा, ये 4 ऑप्शंस आते हैं वहाँ पर। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो नॉट आंसर इन रेड आएगा, आंसर्ड इन ग्रीन आएगा। 7th ऑप्शन देखिए, ये देखिए, क्लिक करिए मॉक टेस्ट को। LLB 5YDC क्लिक करिए, लॉगिन को क्लिक करिए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, जस्ट क्लिक करिए लॉगिन, आपको लॉगिन ओपन हो जाएगा। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ये पूरे इंस्ट्रक्शन सेम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे वहाँ पे। ये इसको इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, नेक्स्ट जाइए, आई एग्री करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए। ये सेम वैसे ही वहाँ पे करना है आपको। सबमिट करिए। इसको डेस्कटॉप मोड पे खोलिए, आ जाता। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा। ओके, और इसमें क्या होगा, आपको मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम देने का आइडिया हो जाएगा। इनफैक्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है ये, बहुत सारे थर्ड पार्टी। आप सिर्फ सर्च बार पर सर्च करिए लॉसेट, LLB लॉसेट, तेलंगाना LLB लॉसेट मॉक टेस्ट, कोई भी सर्च बार पे आप सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कई मॉक टेस्ट तो ऐसे रहते हैं जिसके बहुत अच्छे और जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं जो शायद एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। डेस्कटॉप मोड पे खोलिए, या तो घर जाके डेस्कटॉप पे खोलिए। और कोई डाउट्स? जी, प्रैक्टिस इस चीज़ की करना सर, मतलब अब अगर बाई चांस नहीं आ सकते तो जैसे ये जो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिली जी, तो इसमें क्या है, हमारे मेहमानों भी बहुत सारे जी। तो अगर इस साल अगर आगे चले गया तो मतलब 100% क्वालिफाई होने के लिए क्या प्लान करके उसको हम देखिए 45 मार्क्स पे आप 100% क्वालिफाई हो जाते।
सीट मिलने के इम्कानात है नहीं है, वो डिपेंड करता कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 75 पे पक्का सीट मिलती, 45 अगर आप ला लिए कोशिश कर सकते हैं, सीट मिलती है नहीं मिलती, 50% चांसेस है। नहीं मिली, नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस लिखिए। 1 साल अगर आप डेडिकेटेड है ये प्रोफेशन में ही मेरे को एंटर होना है, तो कोई भी लॉ फॉर्म ज्वाइन करिए, 1 साल उनके बाद इंटर्न एज एन इंटर्न ज्वाइन करिए, सीखिए उनके बाद आप जब सीखेंगे तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेते हैं। ये सेक्शन सी में ऐसा करना चाहिए, आपके साथ भी सेक्शन बेसिक पूछेंगे आपको, आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 21, 35 ओवरव्यू करिए। खाली फंडामेंटल राइट्स मारिए आप सर्च बार पे, आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मारिए, मिल जाएंगे आर्टिकल 50। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट मिल जाएंगे। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये सबको मालूम रहना। शहरी के हुकूक आप ये नहीं बोल सकते। नेग्लिजेंस टूवर्ड्स लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू वायलेट द लॉ। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को लॉ नहीं मालूम था। लॉ मालूम रहना एज अ सिटीज़न उसकी जिम्मेदारी है। एज एन एडवोकेट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, दैट्स इट। लेकिन आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मेरे को लॉ नहीं मालूम था। व्हाट इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े, देखे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े। आइन बोलते हैं उसको, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े उसका, डाउनलोड करके खाली फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आवर सेल्फ्स। का मतलब क्या है इसका? हम ये आइन हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, हम खुद आए लागू कर रहे हैं हमारे ऊपर, कोई दूसरा आके लागू नहीं करा हमारे ऊपर। दूसरा आगे लागू करा तो हम बोल सकते हैं हमको नहीं मालूम था भाई क्या लागू कर दिया, हम पढ़े लिखे नहीं थे। हम हिंदुस्तान के शहरी ये क़वानीन हमारे ऊपर नाखिस कर रहे हैं। हो गई बात। अमेंडमेंट्स है वो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही रहता, अमेंडमेंट है वो, अमेंडमेंट्स है। नाउ एंड देन अमेंडमेंट्स आते रहते। अब रिसेंटली एक अमेंडमेंट नहीं हो सका, कौन सा अमेंडमेंट था वो? लेडीज़ का ऑलरेडी हो चुका है। ये तो है मीडिया का ब्लफ। डिलिमिटेशन पार्लियामेंट सीट्स। ये आता आपको क्वेश्चन? नहीं हुआ ना, बिल पास नहीं हुआ, वुमेन ऑलरेडी पास हो चुका है। तो इसमें आपको क्या रहना, अमेंडमेंट नंबर नहीं पूछता उन्हें, कौन सा अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हुआ था पूछता। डिलिमिटेशन का अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हुआ था। अच्छा, एक रहता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक रहता है जनरल बिल पास होना। जनरल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल में क्या फ़र्क रहता है, ये आ सकता है आपको सवाल। एक जनरल बिल लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में पास कराने के लिए कितनी मेजॉरिटी होना, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कराने के लिए कितनी मेजॉरिटी होना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। और एक कोई सिंपल बिल आया, कोई भी सिंपल बिल, गवर्नमेंट कुछ भी एक एक्ट पास करना चाह रही, देखो वो तो एग्जीक्यूटिव पावर में आ गया। वो कुछ भी एक गवर्नमेंट सिंपल बिल पास करना चाह रही, उसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन हाफ, 1+½ अगर वोट कर दिए तो बिल पास हो गया। जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर देता है या जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लीगैलिटीज़ आ जाते हैं, अमेंडमेंट होता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। और कुछ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, आपका ऐसे इकबाल है, आज करिए, कल करिए, कल दोपहर में आपका एग्जामिनेशन 4 बजे तक का टाइम है आपके पास।
जी 12 बजे कट ऑफ टाइम है। 12 से आप जैसे आज कुछ लोग एग्ज़ाम्स जो है आज सेशन में कुछ लोग लेट आए, खैर सेशन में आपका इस्तकबाल है, आप कभी भी आइए। 12 noon इज़ द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। 1 घंटा पहले आओ बोल रहे हैं। 8 o'clock मॉर्निंग गेट्स खुल जाते हैं। आप कोशिश ये करना कि 8:45 तक आप लोग सेंटर में रहना। हाँ 9:31 होगा एग्जामिनेशन को, 8:45 तक आप लोग सेंटर में रहना। क्योंकि क्या होता आप पैनिक में जाएंगे। ये कंप्लीट एग्जामिनेशन ब्रेन मैपिंग का गेम है। तो क्या होता ब्रेन इज़ लाइक ए कैशे मेमोरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपका फर्स्ट इन क्या रहता है वो टाइम पे? एग्जामिनेशन रहता ही नहीं आपका फर्स्ट इन नहीं रहता, मेरे को अलाउ करता नहीं करता उन्हें बोल के। तो आप जो पढ़ के गए समझ के गए सब दिमाग से आउट हो जाता। तो उसलिए क्या है, तो फर्स्ट इन आपके दिमाग में जो आप जो चीज़ें तैयारी करके गए वो सब आपके माइंड से टेम्प्रोरी यूज हो जाते। फिर वो कब याद आता? पूरा एग्जाम ख़त्म होने के बाद याद आता। तो उसके लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर से इस प्रोफेशन में, ख़ास तौर से बोल रहा हूँ मैं, लीगल प्रोफेशन में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा टाइमिंग का गेम है। आप बिल्कुल जो है मतलब इस प्रोफेशन से नादान है अगर आप डुम्मे मार देते बोल रहे तो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं डुम्मे मार देता हूँ या मैं टाइम पे नहीं जाता हूँ, तो आप बिल्कुल इस प्रोफेशन से नादान है, गाफिल है आप। 10:30 शार्प यू नीड टू बी देयर इन द कोर्ट। शार्प 10:30 आप आओ ना कहो जज आ जाते 10:30 शार्प। और आपका आइटम नंबर 1 है तो 10:31 को कॉल हो जाता उन्हें। आप अपीयर नहीं करें, आपके क्लाइंट का नुकसान। वही बात होता है। पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के बारे में बोलता हूँ। हमारे पास एक रात पहले आते ड्राफ्ट लेके, कल फाइल करना है, कल करना है, कल वकालत डालना है। बाय द टाइम वी मेक एवरीथिंग रेडी, रात में 2-3 बजते। वट एवर वी मेक रेडी 10:30 वी नीड टू बी देयर इन द कोर्ट। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि हम रात में 3 बजे तक काम करके गए, अब नहीं आते बल कल कोर्ट को, बल्कि ना वो एक्सक्यूज़ हम ले सकते ना जज ले सकते। हाँ, बिकॉज एवरीबडी हैज़ ओनली फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम। आपके पास एक ही दरवाज़ा अवेलेबल है जहाँ आप नॉक कर सकते, और यह आपका इख्तियार है नॉक करने के लिए। दूसरे दरवाज़ों पे जाके आपको भीख मंगना, उन्हें करता नहीं करता, ऑन अ मर्सी है। ये एक ऐसा डोर है जो सबके लिए अवेलेबल है। अब सोल्यूशन मिलता, आपके डिज़ायर्ड आपको ऑर्डर मिलता नहीं मिलता वो डिफरेंट स्टोरी हो गई। एटलीस्ट यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बैंग द डोर। आप अपना लिटिगेशन फाइल कर सकते। और यू हैव अ लीगल राइट, नॉट ऑन अ मर्सी। तो इसीलिए पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जज की लाइफ बोलता हूँ मैं आपको, आसान दिखती जज की लाइफ। 10:30 शार्प बेंच पे आ जाना उन्होंने, आ जाना, कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है उनके पास। रेयर केसेस में 1-2 मिनट का एक्सक्यूज़, रेयर केसेस है, सिनारियो रहते, रेयर केसेस में 10:30 शार्प उन्होंने आ जाते। 90% जजेस, 99% जजेस 10:30 शार्प आ जाते। लोअर कोर्ट के जजेस 5 o'clock तक उठ नहीं सकते, काम रहो न करो। लंच ब्रेक रहता हाफ एन आवर का उनको, बस उतना ही। बहुत मुश्किल से, क्योंकि किसी को एज बेस एलिमेंट्स रहते, वो रहते 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे, दैट्स इट। चलो मेरा दिन का काम होता है कि एडवोकेट को तो भी एक लीनियंसी है, ही हैज़ फिनिश्ड ऑल हिज केसेस, उन्हें चलेगा, उनका कुछ काम नहीं है। जजेस के पास वो लीनियंसी नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है। इनफैक्ट लोअर कोर्ट्स में तो भी एटलीस्ट ये है कि जो है 5 o'clock एक बेल रिंग होती है, उन्होंने निकल के चले जाते हैं। हाई कोर्ट्स में नहीं है वो, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। रिसेंटली आपको मैं बोल रहा हूँ, फ्राइडे के दिन बेंच 11:45 रात में 11:45 तक चली। एक हाई प्रोफाइल केस में एंटिसिपेटरी बेल का आर्गूमेंट हुआ था,
2 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ, आज संडे है, फ्राइडे, तेलंगाना हाई कोर्ट। एक हाई प्रोफाइल केस था, बेंच बैठी 11:45 नाइट तक आर्गूमेंट चला, क्योंकि कोर्ट्स की जिम्मेदारी है आर्गूमेंट सुनना। अच्छा नहीं बोल सकते ना हम आर्गूमेंट नहीं सुनते बोल के। हाई कोर्ट्स वैसे ही चलते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स वैसे ही चलते हैं। रिसेंटली एक मद्रास का जजमेंट, लास्ट संडे स्पेशल रिट पिटिशन वॉज फाइल्ड ऑन इलेक्शन। संडे के दिन बेंच खुली, संडे के दिन स्टे ऑर्डर दिए, मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, स्टे वेकेट दिए। In some special matters, yes, court works beyond time limits. I have practically seen vacation courts working till midnight 2 a.m. लास्ट ईयर की बात बोल रहा हूँ, अभी वेकेशन कोर्ट्स तो भी एटलीस्ट रात में 11:15 बजे ख़त्म हुए। लास्ट ईयर वेकेशन कोर्ट सुबह 2 बजे तक चले, 2 a.m. इन द मॉर्निंग। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि जो है जुडिशरी इज़ नॉट सीरियस, जुडिशरी इज़ नॉट सीरियस, या एडवोकेट्स आर नॉट सीरियस, या एडवोकेट्स आर नॉट सीरियस, ये मिथ निकाल दीजिए। ये मार्केट में एक मिथ है, ये एक बबल क्रिएट करा हुआ है। लॉयर्स आर वेरी सीरियस टू द प्रोफेशन। जो सीरियस नहीं है, मैं अभी बोलता हूँ, अगर कोई सीरियस नहीं है प्रोफेशन में तो मत आइए इस प्रोफेशन में। लोग आते प्रोफेशन में क्या दिखता है कि कलरफुल लाइफ, पैसा दिखता है। यस, ये प्रोफेशन में पैसा बहुत है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये प्रोफेशन में पैसा बहुत है, लेकिन कब है पैसा? कब है पैसा? नहीं, टाइम तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम पे तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता, वॉचमैन भी रहता, अटेंडर भी रहता। वंस यू लर्न द स्किल्स ऑफ एडवोकेसी, सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, वंस यू लर्न द स्किल, आप डे 1 से क्या करते? आप अर्निंग की तरफ जाते, आप मेथड्स तलाश करते लिटिगेशन के, रिजॉल्व करने के, अनएथिकल मेथड्स में जाते। वो अनएथिकल मेथड्स आपको पैसा तो कमा के दे देते, लेकिन वो अनएथिकल मेथड्स आपको लीगल प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं देते, और उसी वजह से प्रोफेशन बदनाम हो जाता। सिंसियर टुवर्ड्स प्रोफेशन रहिए। आपकी लड़ाई, आपका बैटल ग्राउंड क्या है? नहीं, बुक्स तो आपके वेपन से। बैटल ग्राउंड क्या है आपका? कोर्ट। कोर्ट इज योर बैटल ग्राउंड, नो अदर प्लेस इज योर बैटल ग्राउंड। आप एडवोकेट है, आपके सर पे 2 सिंह नहीं आ गए कि आप हर जगह जाके अपना बैटल ग्राउंड बनाइए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोर्ट्स आर ओपन फॉर यू, मेक योर बैटल ग्राउंड एज कोर्ट। तो आप सीरियस है प्रोफेशन के लिए, आपको हर रेमेडी मिलती है फिर यहाँ से इंशाल्लाह। और एक बार आपके स्किल्स इन्हांस हो गए, देन अर्निंग के लिए आया। मैं बोल रहा हूँ, अर्निंग के लिए स्काई इज द लिमिट। आप सोच नहीं सकते उतने केसेस, उतनी अर्निंग्स आती है आपको। आप एक स्टेज ऐसा आ जाता, आप रोक देते, ये केस मैं नहीं लेता हूँ बोल के। उसके लिए आपको डेडिकेशन देना है, कम से कम 3 से 5 साल। और मैं 3 से 5 साल सबको बोलूँगा, 3 से 5 साल अपनी ज़िंदगी के कमाई की तरफ मत जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, फेस ऑफ द लाइफ। आप लॉ पढ़ते हुए या लॉ पढ़ने के बाद जिस दिन कोर्ट आना शुरू कर रहे हैं आप, ये आपके 3 से 5 साल या तो आप अर्निंग में जाइए, या लर्निंग में जाइए, या अर्निंग में वेस्ट करिए। अगर आप अर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो अपना वेस्ट कर रहे हैं आप टाइम, क्योंकि आप स्टैग्नेट हो जाते हैं, आपका लर्निंग फेज निकल जाता। आप जब तक जूनियर एडवोकेट्स है, यंग इंटर्न्स है, लोग आपको सिखाते, जजेस भी आपको मोटिवेट करते, ओके ठीक है आइए रिप्रेजेंट करिए, बेंच आर्ग्यू करिए, जजेस भी मोटिवेट करते। थोड़े जजेस फ्लेक्सिबल होकर ऑर्डर्स भी दे देते। एक यंग एडवोकेट आया, भाई कितना कब का एनरोलमेंट है, पूछे आपसे, यस आई हैव एनरोल्ड इन 2020, ओके फाइन, यू कम अप विद योर आर्गूमेंट। आप थोड़ा बोड़ा आर्गूमेंट दिए, कुछ गलतियाँ भी करे तो जजेस नेगलेक्ट करके आपको मोटिवेट करने के ऑर्डर भी पास कर देते। आपसे पूछा कि आपका एनरोलमेंट कब है, आप आज 2026 में बैठे हुए, 2026 का एनरोलमेंट है, आप 31 में जाके जज के सामने ठहर के बोले, लॉर्डशिप आई डोंट नो, आई वॉज बिजी इन अ लोअर कोर्ट्स, आई नेवर अपीयर्ड इन हाई कोर्ट। बोले तो गो एंड लर्न एंड कम बैक, अनलेस एंड अनटिल, और एल्स कॉल योर सीनियर बोलते हो।
तो यूटिलाइज दैट पीरियड इन लर्निंग, नॉट इन अर्निंग. तो इससे हम हमारे सेशन का अख्ताम करेंगे. आपको कुछ डाउट्स है तो बेझिझक कभी भी खान से एडवोकेट्स के पास आइए. मैं रहूँगा, हमारे एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान साहब रहेंगे. हमेशा डेडिकेटेडली अवेलेबल है, डेडिकेटेडली कम्युनिटी के लिए हमेशा एज ए पिलर ठहरे हुए रहते हैं. उन्होंने जो है एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते, एज ए लॉ फैकल्टी लॉ कॉलेज में, ही इज़ एन प्रोफेसर इन ए लॉ कॉलेज. इसके अलावा सोशल वर्क एक्टिविटीज़ है. इनके पास एक फ्री लीगल एड क्लिनिक भी चल रहा है. तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि एज ए लॉयर हमारी जिम्मेदारी है टुवर्ड सोसाइटी ऑल्सो. हम सोसाइटी को गिव बैक करना ज़रूरी है. तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हो रहे हैं. आइए आप इस तंजीम से जुड़िए, इंशाल्लाह आपको कुछ बेहतर हासिल होगा यहाँ से. ठीक है. और कुछ यही है, आपको लोकेशन मिल जाएगा खान से एडवोकेट ऑफिस का. कौन सा? खान से एडवोकेट्स ऑफिस जो है